In December 2019, there was a cluster of pneumonia cases in China. Investigations found that it was caused by a previously unknown virus, now named the 2019 novel coronavirus. In this video, we'll take a quick look at what's currently known about the virus. Keep in mind that this is a new virus, and what's known about the virus now might change in the future. Coronaviruses are a large group of viruses. They consist of a core of genetic material surrounded by an envelope with protein spikes. This gives it the appearance of a crown. Crown in Latin is called corona, and that's how these viruses get their name. There are different types of coronaviruses that cause respiratory and sometimes gastrointestinal symptoms. Respiratory disease can range from the common cold to pneumonia, and in most people, the symptoms tend to be mild. However, there are some types of coronaviruses that can cause severe disease. These include the severe acute respiratory syndrome coronavirus, first identified in China in 2003, and the Middle East respiratory syndrome coronavirus that was first identified in Saudi Arabia in 2012. The 2019 novel coronavirus was first identified in China. It initially occurred in a group of people with pneumonia who'd been associated with a seafood and live animal market in the city of Wuhan. The disease has since spread from those who were sick to others, including family members and healthcare staff. There are many cases at present, and the disease has spread within China and also to a number of other countries. So, where did the virus come from? It's known that coronaviruses circulate in a range of animals. Sometimes these viruses can make the jump from animals to humans. This is called a spillover and could be due to a range of factors such as mutations in the virus or increased contact between humans and animals. For example, MERS-CoV is known to be transmitted from camels and SARS-CoV from civet cats. The animal reservoir of the 2019 novel coronavirus is not known yet. How is it transmitted? The exact dynamics of how the virus is transmitted is yet to be determined. In general, respiratory viruses are usually transmitted through droplets created when an infected person coughs or sneezes, or through something that has been contaminated with the virus. People most at risk of infection from the novel coronavirus are those in close contact with animals, such as live animal market workers, and those who are caring for people infected with the virus, such as family members or healthcare workers. So, how does the disease present? Well, from what is known so far, there can be a number of symptoms ranging from mild to severe. There can be fever and respiratory symptoms such as cough and shortness of breath. In more severe cases, there's been pneumonia, kidney failure, and death. The mortality rate is not known yet. How can we tell whether someone is infected? The infection can be diagnosed by a test called PCR, or polymerase chain reaction. This test identifies the virus based on its genetic fingerprint. There's currently no specific medication for the virus, and treatment is supportive care. There's currently no vaccine to protect against the virus. Treatment and vaccines are in development. How do we prevent transmission of the virus? This new virus currently has a limited geographic spread. However, there are a number of standard hygiene practices that have been recommended to protect against infection and further spread. These include covering your mouth and nose when coughing or sneezing with a medical mask, tissue, or flexed elbow, avoiding close contact with those who are unwell, the appropriate use of masks and personal protective equipment, especially in a healthcare setting, washing hands regularly with soap and water or alcohol-based hand rub. Actions that can be taken to prevent infection from an animal source include avoiding unnecessary unprotected contact with animals, washing hands after contact with animals or animal products, and ensuring that animal products are cooked thoroughly before they're consumed. It's important to stay home if you're feeling unwell, but if you have a fever, cough, and difficulty breathing, seek medical care early and share your previous travel history with your healthcare provider. That's a quick look at this emerging infectious disease. Given that this outbreak is evolving rapidly, what's known about this virus can change. Please check the websites below for the most up-to-date information.
बंद कर दीजिए। पहली बात, मैं कोरोना के बारे में आपको कुछ भी वो सब नहीं बताऊंगा जो आप सब जानते हैं व्हाट्सएप पे इंटरनेट पे पढ़ के, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं वो बता रहा हूँ आप कैसे डिफरेंशिएट करो कि आपको कोरोना है या नहीं है। उसके बाद आप में से कोई अगर वो सिम्टम नहीं है तो उसको लगता है कि मुझे कोरोना नहीं है, वो फील वापस से घर जाए, कुछ होता है। ठीक, खांसी, जुकाम, बलगम, बुखार, यही झगड़े हैं सबके। ठीक है, अगर आपको सूखी खांसी हो रही है, ड्राई कफ, खांस रहे हो बस, ये केवल पॉल्यूशन कफ है, केवल प्रदूषण से हो रहा है। अगर आपको खांसी के साथ बलगम आ रहा है, नाक बहरी है, ये आपको एलर्जिक कफ है। ठीक, यदि आपको नाक बहरी है, बलगम आ रहा है और आपको खांसी हो रही है, उसके साथ ऐसा अगर हो रहा है तो ये फ्लू या स्वाइन फ्लू कुछ भी हो सकता है, या नॉर्मल वायरल, जिसे कहते हैं वायरल हो गया आपको, ये वो भी हो सकता है। ये कोरोना नहीं हो सकता। पर अगर आपको बुखार, सूखी खांसी, तेज बुखार, सूखी खांसी और सांस फूलना, जोड़ों में दर्द, चलो जोड़ों में दर्द सब चीजों में हो सकता है। मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर है कि अगर आपको खांसी के साथ बुखार है, तो खांसी सूखी और तेज बुखार है, तो ही ये कोरोना हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो भी हो। तो उससे पैनिक करना बंद करिए। मोस्ट ऑफ द लोगों को उससे डर लगता है। अब आप मुझे बताओ, इतने लोग बैठे हो, आप में से कितने लोगों को तेज बुखार और सूखी खांसी है? बताइए कितना को। बलगम वाली खांसी, जुकाम बहुत लोगों को होगा, आप में से किसी को कोरोना नहीं है, फीस ले लो चले जाओ। मैं बता रहा हूँ, बिना मत ले लो। डरो नहीं कोरोना से। कोरोना ऐसे नॉर्मल वायरल है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। वो आपके और हमारी तरह नॉर्मल वायरल की तरह आता है, चला जाता है। बिगड़ता किसका है? जिसकी ओल्ड एज है, उसकी इम्यूनिटी पावर कम है, उसको डायबिटीज है, उसको शुगर है, वो कैंसर पेशेंट है, उसकी इम्यूनिटी कम है, छोटा सा वायरल उसके ऊपर हमला कर देता है। और दूसरा, ये सैनिटाइजर का झगड़ा बंद करिए। ठीक, कोई जरूरत नहीं सैनिटाइजर की, साबुन है, हाथ धो लीजिए अच्छे से। पहले के जमाने में तो राख से हाथ धोते थे, चलिए राख से मत धोइए, आप नॉर्मल साबुन पानी से हाथ धोइए, कुछ नहीं फैलेगा कोरोना। दूसरी बात, एक बात और सीख के जाइए, जो लास्ट बात है, फिर मैं वापस आप लोगों को टाइम ना वेस्ट करके शुरू करता हूँ। छींकना और खांसना कैसे, ये आज नहीं आगे तक के लिए। हम कैसे छींकते हैं, चलो हो गया, ठीक है, इनके ऊपर भी गिरा दी, इनके ऊपर भी गिरा दी। आज के बाद आप सब खांसेंगे या छींकेंगे तो ऐसे अपनी बाजू, क्योंकि इधर आप टच नहीं करते हैं बार बार। ठीक है, और शर्ट को आप हटा के चेंज करते जाइए। ठीक है, करके दिखाइए सब कैसे खांसेंगे छींकेंगे। तो कोरोना से मत डरिए, उस समय में सब शांत हो जाएगा। रिलैक्स रहिए, अवेयर रहिए, कंफ्यूजन है आइए, घबराइए मत। ठीक है, थैंक यू सो मच।